Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all well. So we are resuming with our paper 3 yearly past papers. We are done with all the papers from 2021 to 2023 already, except this November 2022 session. So in the next few days, we will be doing the 3 papers from this session as well. ठीक है, और फिर हमारे 2021 से 2023 तक सारे papers हो जाएंगे paper 3 के भी. You can find the rest of them in the description below. उसमें आपको link मिल जाएगा yearly past papers का, which has all the papers solved from 2021. Not just paper 3, you'll also find them S1, P1, and M1 as well. Along with that, if you look at this description below, you'll find a lot of other helpful content. For example, you have quick revision videos on a number of paper 3 topics. I'll be adding more to that in the next few days as well. And you have quick revision videos on S1 as well. I've also uploaded complete recordings of the whole syllabus. You can find the links for those playlists in the description below as well. Pura course content aapko wahan pe mil jayega. If there's any particular topic that you want to study in detail, you can have a look at those playlists as well. Okay, so this is what we are going to be doing today. Paper 3, variant 2, October, November 2022. This is A-level maths, 9709. Let's begin with this then. Question number 1. So it says, solve this equation. 2 raised to power 3x minus 1 equals 5 into 3 raised to power 1 minus x. We have to give an answer in the form ln a over ln b, where a and b are integers. Now, how do we solve this equation? We have x in powers here, right? और terms के दरम्यान में हमारे पास भी plus minus नहीं आ रहा. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? Directly log apply कर सकते हैं. We can say let's take log on both sides. So we have ln of 2 raised to power 3x minus 1 on the left side. On the right side, we would have ln of 5 into 3 raised to power 1 minus x. Okay, so you take log on both sides. Now on the left side, you can take the power here and multiply with ln2. So it becomes 3x minus 1 whole multiplied by ln2. And then on the right side, what you can do is you can apply multiplication law to split this a bit, and this would become ln5 plus ln3 raised to power 1 minus x. अब इस पे power law भी नहीं apply कर सकते थे first step के अंदर, because power सिर्फ 3 के ऊपर आ रही थी, 5 के ऊपर power नहीं थी. ठीक है, तो आपको पहले multiplication law लगा के आपको क्या करना पड़ा, इसको expand करना पड़ा. If you have multiplication inside log, it becomes addition outside log. Okay, so that's what we have used here. And now what we can do is we can simplify this further. On the left side, it becomes 3x into ln2 minus ln2. On the right side, we have ln5 plus, now we could take 1 minus x out of the power and multiply with ln3, and it becomes 1 minus x into ln3 like this. And now we can simplify both sides, make x the subject, and see what we get from that. 3x into ln2 minus ln2. On the other side, we have ln5 plus ln3 minus x ln3. Now take all the x terms to one side because you want the value for x from this, right? So x terms x side per agent, that is going to give you 3x into ln2 plus x into ln3. Take everything else to the other side, and that will give you ln5 plus ln3 plus ln2 on the other side. Okay. Now, since we want the value for x, we can make x the subject. We can take x common here on the left side, and that leaves us with 3 ln2 plus ln3 inside the brackets. On the other side, we have ln5 plus ln3 into ln2. Now think about this. What's the final result that we need? Final result हमें चाहिए इस form के अंदर ln a over ln b form के अंदर. So आपने decimals में answer नहीं देना, exact form में answer चाहिए, ln के terms में चाहिए.
A single ln चाहिए numerator में भी denominator में भी. What we can do is we can simplify this. ln5 plus ln3 plus ln2, we can use multiplication law. This is addition outside log. Log के अंदर आके क्या हो जाएगी? Multiplication हो जाएगी. And it's going to become 5 multiplied by 3 multiplied by 2 inside like this. Now, let's take this thing to the other side and divide there and see what that gives us. In the numerator, we have 15 into 2, that's 30. ln 30. In the denominator, we have 3 ln 2 plus ln 3. अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. बट रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लॉ के लिए कंडीशन क्या होती है? ln के साथ जो बाहर वाला नंबर है, that has to be 1. It cannot be anything other than 1. अब इसको 1 कैसे बनाए? We can take 3 to the power. So इस 3 को हटा के यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पावर में लिख सकते हैं. And now it can be written as ln 30 divided by ln 8 plus ln 3. We can use multiplication law at this point, and we can say this becomes x equals ln 30 divided by ln of 8 multiplied by 3. What is that going to give you? That is going to become 24. So that's ln of 24. This is addition outside log. Inside log, it's going to become multiplication. And that's what you needed at the end. आपको चाहिए था answer इस form के अंदर ln a over ln b. आपने उस form के अंदर answer दे दे. You don't have to simplify this. You just leave it as it is. And that's your final answer. Okay? You cannot do anything after this. इससे आगे कुछ नहीं करना. ठीक है? This is your final answer. Do not convert this to decimals. Okay, that's not allowed. All right. That was question number 1. Let's move on to the next one. Now it says we have this polynomial 2x cubed minus x squared plus a, where a is a constant. It's denoted by p of x. It's given that 2x plus 3 is a factor of p of x. Find the value of a. Okay, so we have a linear factor given. 2x plus 3 is a linear factor. इस पे हम remainder theorem apply कर सकते हैं, right? Now, since it's a factor, remainder क्या होना चाहिए? Remainder has to be 0. Okay, remainder has to be equal to 0. So we say let's put this thing equal to 0 पहले, ताकि हमें पता चले x की कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है. हमें x की वैल्यू इनपुट करनी है -3/2. So if this is the polynomial, let's call this p of x. हम क्या करेंगे? polynomial के अंदर इनपुट कर देंगे -3/2. Okay, let's see what we get from that. 2 into -3/2 whole cube minus -3/2 whole squared plus a. Now on the left side, we have p of -3/2. Remainder क्या है आपके पास? Remainder is supposed to be 0, right? तो आप इसको क्या करोगे? इसकी जगह पर 0 डाल दोगे. It says 0 equals this thing. 2 into -3/2 का whole cube. Just use a calculator for this and see what this simplifies to. -27 over 8 multiplied by 2, and that is going to give me -27 over 4 on the right side. Okay, then the next term has a square on this, so that's 9 over 4. Minus एक बाहर लगा हुआ है, वैसे वैसे रहेगा -9 over 4 plus a. ठीक है, this is what we get. You can find the value of a from this and see what that turns out to be. 27 over 4 plus 9 over 4, that is going to be 36 over 4, which is 9. So the value of a therefore turns out to be 9. And that's what we were looking for. Okay, a equals 9. That's our final answer. Let's look at part B now. Part B says when a has this value, solve this inequality p of x is less than 0. Now, how do you solve inequalities? Inequalities कैसे solve करते थे? Now, there are multiple ways of doing this. One possibility is कि आप इसको as an equation treat करो पहले, cut off points find कर लो, उसको use करके आप देखो क्या होता है. Now, the first thing we need to do is we need to factorize this polynomial, right? So हमारे पास inequality बनती क्या है? अभी उसने कहा है 2x cube. The polynomial is 2x cube minus x square plus a. The value for a is 9. So plus 9 is less than 0. This is the inequality that we have basically. Okay. Now the first thing we need to do is we need to factorize this thing on the left side. How do you factorize it? You'll have to do division for that, right? Long division कर लें, synthetic division कर लें, if you know that. दोनों से कर सकते हैं. So that's your choice. If I were to do synthetic division, if you know that, that's pretty quick. Otherwise, you can just do long division as well. I
होप आप वो तो सबको आती है, बट लेट मी जस्ट ट्राई दिस यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। उससे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सिंथेटिक डिवीजन रिमेंबर हम क्या करते थे उसके लिए, we used to say let's write down the coefficients here in the first row। पहले 2 लिख दिया, x square का coefficient 0 है, so that's 0। you have -1, sorry, x square coefficient -1 है, then you have 0 and then you have 9 because the x term is missing, x coefficient 0 है, उसके लिए हमने 0 डाल दिया। अब किससे डिवाइड करना था हमें इसको, फैक्टर एक दिया हुआ 2x + 3। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू हमने क्या इनपुट करनी है, -3/2। we input -3/2 here like this, and then the process works like this, that this number 2 is going to come down as it is, first number वैसे आ जाएगा, then you multiply these two, -3/2 into 2, that's going to give you -3, add -1 and -3, that gives you -4, multiply these two numbers, -3/2 into -4, that should give you 6। यहाँ पे 6 आ गया, 0 + 6, what's that, that is 6, 6 into this number now, that gives you -9, and 9 minus 9, that is 0, and that's it, it's as quick as this। okay, बस आपको सिर्फ ये करना है। अब आपके पास क्या हो गया, लास्ट नंबर तो रिमाइंडर है, ठीक है। what about the quotient, where does the quotient come from, quotient is going to come from here। ये क्या आपके पास बनेगा, last term is constant, then x term, then x square term, so you have 2x square minus 4x plus 6, but that's not your final answer here, that's not the quotient yet। आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी होती है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है इससे डिवाइड करना होता है, इससे पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास quotient क्या आएगा, that is going to be x square minus 2x plus 3, that is the quotient that we have। okay, that's one way of doing this। if you're more comfortable with long division, that's perfectly okay, just do that, आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। I just want to give you another idea, ये भी कर सकते थे, long division तो hopefully सबको आती होती है, आप उससे कर लें, you'll get the same quotient at the end। now what happens is when we do this, the inequality can now be written in this form। you can say this inequality is now 2x plus 3, that's the linear factor, and then the quadratic factor is x square minus 2x plus 3। this is the inequality that we have to solve now। now how do you solve cubic inequalities, इस तरह से हम क्या करते थे, हम कहते थे let's treat this as an equation first of all, इसको as an equation treat कर लें और उस equation को solve कर लें पहले तो, 2x plus 3 into x square minus 2x plus 3 equal to 0। let's solve this equation first of all। now this gives us either 2x plus 3 equals 0 or x square minus 2x plus 3 equals 0। अब first equation से आपके पास क्या आया, x equals -3/2, that's the answer that you're getting from this। ये जो second quadratic equation है, इसको आप solve करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। you can try that। factorization यहाँ पे नहीं कर सकते हम, अगर हम quadratic formula में input करके देखते हैं, we get minus into -2 plus minus square root of -2 whole squared minus 4 into 1 into 3, and you would realize this is not possible, so you don't get anything from this। the only cutoff point that you're getting is -3/2। okay, but that's not your final answer, that is not your final answer। आपने inequality solve करनी थी, आपने equation नहीं solve करनी थी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मॉडुलस वाला मेथड वही यूज कर लो। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव -3/2। आपने क्या करना है, ये वर्किंग दिखानी यहाँ पे जरूरी होगी, इनइक्वालिटीज के केस में आपको वर्किंग प्रॉपर्ली दिखानी है कि आप किस तरह से डिसाइड कर रहे हो। अब इसमें आपने लेस देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन साइन लगाना है, दिस हाउ यू गोना डू इट। आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है, and you have this number -3/2 in the middle। take one number to the left of it, one number to the right of it, और देखें कौन सा रीजन सही होना चाहिए। ठीक है, -3/2 के लेफ्ट पे कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, we could try for instance -3, that's a smaller number। right side पे we could take 0। इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी के अंदर चेक कर लेना है, देखना है कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है, कौन सा नहीं करता। उस इनइक्वालिटी के अंदर आप क्या करें, एक दफा -3 इनपुट कर दें, एक दफा 0 इनपुट कर दें। ठीक है,
Let's input -3 in that first of all. -3 input करते हैं तो हमारे पास आता है 2 into -3 whole cube minus -3 whole square plus 9 less than 0. What does that give us? On the left side, that's -27 into 2 minus 9 plus 9, that's -54. -54 less than 0. Is that correct? That is correct. So that means the region on the left side is correct. Okay, ये वाला region correct आ गया. अब right side वाला most likely incorrect ही होगा. आप check करके देख लें. आप 0 input कर लें एक दफा. 2 into 0 cube minus 0 square plus 9 is less than 0, and that is going to give you 9 less than 0, which is of course incorrect. The right side वाला region correct नहीं है. So क्या मतलब? What's your final answer to this inequality? You would say x is less than -3/2 because ये left side वाला region valid है cut off point के. ये आपका final answer होना चाहिए यहाँ पे, x less than -3/2. ठीक है? Now, if you do it directly thinking कि अच्छा ये less than का sign था यहाँ पे, तो इसलिए इधर भी minus, इधर भी less than आ जाएगा, you're not going to get full marks for that. अगर आप directly लिख देंगे without justifying how you're getting to this final answer, you would not get full marks for this. Okay? सिर्फ आंसर लिखने के यहाँ पे मार्क्स नहीं है. अगर आपका मेथड सही नहीं है, प्रॉपर आपने उसकी जस्टिफिकेशन नहीं शो की हुई है, you will not get full marks. Okay? इसमें एक्सीडेंटली बाय कोइंसिडेंस भी आपका सही आंसर आ सकता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर कहते हैं कि अच्छा either 2x plus 3 is less than 0 or this thing is less than 0, and that will give you the same thing as well. But you would not get full marks for that because that's not the correct way of doing this. Okay? All right, let's move on. Let's move on to the next one. Question number 3. It says the equation of a curve is y equals sine x into sine 2x. The curve has a stationary point in the interval 0 to pi/2. Find the x coordinate of this point, giving an answer correct to 3 significant figures. Let me write that down here. So we have y equals sine x into sine 2x. This is the function that we have. Stationary point उसने कहा हुआ है कि 0 और pi/2 के दरम्यान में, that means it's an acute angle, right? We need to find the x coordinate of that point. क्या करेंगे उसके लिए? इसको differentiate करेंगे, 0 से equate कर देंगे, right? That's how you find stationary points. Now it's a product. Product को differentiate करने के लिए we have to use the product rule. So let's say this is u and this is v, and use the product rule on this. The rule looks like this. Derivative जो होता है वो होता है uv dash plus vu dash. Let's just input values in that. U as it is first of all. So sine x remains as it is. Into derivative of sine 2x. What is that going to be? Sine के derivative is cos. So that becomes cos 2x. But then you have to multiply with the derivative of 2x as well, which is 2. That's uv dash. Plus v as it is. That means sine 2x as it is. Into derivative of u, which is going to be cos x. Sine का derivative cos होता है, so that's cos x. Yeah, आपने differentiate कर लिया. Now, since you're looking for the stationary point, you put this equal to 0 now. It says 0 equals this whole thing. Now you simplify this and see what that gives you. 2 into sine x into cos 2x plus sine 2x into cos x. Now we need to solve this equation. Now, remember, in order to solve trigonometric equations, what you need is only one trigonometric function and only one type of angle. या तो वो x होना चाहिए, 2x होना चाहिए, दोनों में से एक चीज हो सकती है, और फंक्शन भी आपका एक होना चाहिए. यहाँ पे दो फंक्शंस आ रहे हैं. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल एंगल से खत्म कर लेते हैं, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं. ठीक है? Now what is cos 2x? Cos 2x की 3 different forms होती हैं. It's not very clear कि कौन सी फॉर्म यूज करना ज्यादा एफिशिएंट होगा. आप तो तीनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर लें. Right? So it's cos square x minus sine square x. This is one form. And you have 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sine square x. तीनों में से आप कोई भी यूज कर लें, it doesn't matter. Okay? So let me, for example, put cos square x minus sine square x here for now. फिर हम बाद में देखेंगे इसको और क्या कर सकते हैं. अच्छा, what about sine 2x? Sine 2x is 2 sine x cos x. Again, that's given in the formula sheet. Sine की double angle identity. It becomes 2 sine x cos x, and then outside you have cos of x multiplied. On the other side, you've got 0. Let's simplify and see what we get from this. We have 2 sine x
into cos square x minus 2 sine cube x plus 2 sine x into cos square x equal to 0. This is what we're getting. Now, how do we solve this equation? Now, one thing that we should notice here is that sine is common in all of these three terms, and also 2. 2 is coming in every term, and also sine is coming in every term. What we can do is we can take 2 sine x common. And if we do that, we're left with cos square x minus sine square x plus cos square x. ओके इनफैक्ट हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये दोनों टर्म सेम है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते, बाद में कॉमन ले लेते, या पहले कॉमन ले लिया हमने तो बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin x into 2 cos square x minus sin square x equals 0. And now it's a product. One thing is being multiplied by another thing, and we are given that the product is equal to 0. इसका मतलब क्या है? Either the first expression is 0 or the second expression is 0. दोनों में से एक expression 0 होनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि either 2 sin x equals 0 or 2 cos square x minus sin square x equals 0. ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर देते हैं. Now, what do we get from the first equation? Sin x equals 0. Sin 0 कहाँ पर होता है? इसमें quadrant वाला मेथड नहीं अप्लाई होता. रिमेंबर, आपको ग्राफ का सोचना पड़ता है. Sin x 0 होता है 0 के ऊपर, फिर आपके पास होता है पाई के ऊपर, फिर 2 पाई के ऊपर. It turns out आपका जो इंटरवल है उसके अंदर कोई भी वैल्यू फॉल नहीं करती है, राइट? 0 इंक्लूडेड नहीं है आप इंटरवल में, तो sin x equals 0 से आपको कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है, we don't get any value in the given interval. So we have no value in the interval that's given. ठीक है. What about the second equation? How do we solve this equation? इसको हम क्या कर सकते हैं? एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. We have cos square and sin square. दोनों में या तो cos square को sin square में कर दें, sin square को cos square में कर दें, दोनों में से एक चीज कर लें. ठीक है, so let's say मैं sin square की जगह पे लिख देता हूँ 1 minus cos square. Now, what do we get from that? We have 2 cos square x minus 1 plus cos square x equals 0. And that gives me 3 cos square x on the left side, and that's going to be cos square x equal to 1 over 3. Okay, now we can take square root on both sides, but remember, whenever we take square root, we have to put plus minus, so it becomes plus minus square root of 1 over 3. All right, we have to give our answer in decimals at the end, so stop decimals में लिख लें. That's okay. Let me evaluate this. So 1 divided by 3, square root of that is 0.577. So cos of x is plus minus, do not forget plus minus, 0.57735. Okay, अब देखते हैं आप कौन से क्वाड्रेंट में हो सकते हैं. वैसे तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं because it's plus minus, right? So it can be any of the 4 quadrants. लेकिन उसने इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 से pi over 2. So you're only looking for the acute angle. तो आपको essentially basic angle ही चाहिए सर. ठीक है, तो जो भी आपका बेसिक एंगल आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होएगा इसके अंदर. इसका हम बेसिक एंगल निकाल लेते हैं. प्लीज मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द करेक्ट मोड हियर. It has to be in radians, and then you can evaluate this and see what this turns out to be. Cos inverse of this number, this is giving me 0.955. Alpha turns out to be 0.955. Now, this is the basic angle that we have, and that's the only answer that we can have here because we can only be in the first quadrant. So we say our final answer therefore is 0.955. That's the x coordinate of the stationary point that we were looking for. Okay.
That was 6 marks. Not very complicated. Differentiate किया, 0 से equate कर दिया, उस equation को solve कर लिया. ठीक है, let's move on. Question number 4. It says express 4 cos x minus sin x in the form r into cos of x plus alpha, where r is greater than 0 and alpha is between 0 and 90. State the exact value for r and alpha to get to 2 decimal places. It's a standard question, free 3 marks that you have in paper 3. आपको बस 2 formulas use करने होते हैं. उससे पहले बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है. जिस फॉर्म में उसने कन्वर्ट करने के लिए कहा हुआ है, गिवन फॉर्म में वो वाला फंक्शन पहले आना चाहिए. अगर वो फंक्शन पहले नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे कॉज लिखा होता और यहाँ पे साइन पहले आ रहा होता, तो आपने क्या करना था, इन टर्म्स को पहले स्विच कर लेना था, राइट. तो बाद वाली टर्म पहले लिख लेते, पहले वाली टर्म बाद में लिख लेते. यहाँ पे तो ऑलरेडी वो कंडीशन मीट हो रही है, कॉज में कन्वर्ट करना है और पहले कॉज लिखा हुआ है. ऑल यू हैव टू डू इज यू कैन से दिस वैल्यू इज a, लेट्स से दिस इज 5. व्हाट्स द सेकंड वैल्यू b? तो यहाँ पे आपके पास नंबर नहीं रखा हुआ, but you can say that's 1, right? So that's -1. आपको सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी होती है. We don't care about the sign there. We say b is equal to 1. Okay, and now we just have to use these two formulas. R equals square root of a square plus b square, and tan alpha equals b over a, and you would get the result that you're looking for. Square root of 5 squared plus 1 squared, and that's going to give me square root of 26. That's the value for r that we have. Tan alpha equals 1 over 5. Notice this is in degrees, so you have to be very careful with your calculator in paper 3. आपको बार बार एंगल का यूनिट चेंज करना पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अब डिग्रीज में रखना है कैलकुलेटर, एंड फाइंड tan inverse of 1 over 5, and that is giving me 11.3099. So that's 11.31 degrees to 2 decimal places. ये हमें चाहिए था. ठीक है, r कर लिया, r फाइंड कर लिया और alpha फाइंड कर लिया. वो फॉर्म क्या बन जाएगी, r cos, r is square root of 26 into cos of x plus alpha. That's x plus 11.31 degrees. This is what we needed at the end. ठीक है, ये हमें figure out करना था. Let's move on. Let me have to just confirm this. Okay, I'm sorry about this. There was a careless error here. So this was 4. I wrote 5 there. I'm sorry about that. Let me just correct that. Oh, 5. Okay, so let's do that again. Sorry about that. For 4 लिखा हुआ था, I assumed that to be 5. अच्छा, so पहला number क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? This number is a, so you'll say this is a equal to 4. The second number you have minus here, साथ 1 लगा है, इसका मतलब है आपको सिर्फ positive number consider करना है. You would say b equals 1. Okay, and once you have written down the values for a and b like this, you would say, you just use these two formulas, r equals square root of a square plus b square, and tan alpha equals b over a. Okay, now all you have to do is just input values here and see what that gives you. A is 4, so that's 4 squared plus 1 squared. Iska square root, that is square root of 17, and from there you get tan alpha equals b over a. The value for b is 1 and a is 4. Find tan inverse of this. Your calculator has to be in degrees mode here. पिछले क्वेश्चन में radians था, यहाँ पे degrees आ गया, तो आपने ensure करना है कि आप correct mode use कर रहे हो. Tan inverse of 1 over 4, and that is giving me 14.036. 14.036, but you have to have your answer to 2 decimal places. So उसको round off करके क्या लिखोगे, 0.04 degrees. ठीक है, अगर इसमें आपने सही तरह से round off नहीं किया, you will lose 1 mark. So what's your
final form then, it's square root of 17 into cos of x plus alpha. So that's x plus 14.04 degrees. That's what we were looking for here. ठीक हो गया? Let's move on to the second part. Second part में उसने कहा hence solve this equation. Now how is this connected to the first part? First part में आपने क्या किया? Let me just write that here. So we have that in front. It will help us work with this. 4 cos x था हमारे पास minus sin x. 4 cos x minus sin x, we converted that to square root of 17 into cos of x plus 14.04 degrees. This is the form that we converted this to. Okay? Now, how is this similar to what we're given here? How are these two connected? आप देखें, change क्या हुआ है? x जहां पे लिखा हुआ था उसकी जगह पे 2x आ गया. तो आपने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐसे लिख देना है. आप कहेंगे जो लेफ्ट साइड है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. The only difference is going to be that on the left side, instead of having x, we would have 2x. So इस x की जगह पे भी क्या आएगा, 2x आ जाएगा यहाँ पे. We have 2x plus 14.04 degrees. That's what we have on the left side. Left side को आप इसमें convert कर लोगे. On the right side you have 3. अब आपने इस equation को solve करना है. इसको solve करना तो आपने paper 1 में भी सीखा हुआ है. How do you do this? First of all, what we can do is we can use a substitution. Substitution के बगैर भी कर सकते हैं, but it's often simpler to do it using this substitution. कि जो भी अंदर angle लिखा हुआ है इस पूरे को आप क्या करोगे, किसी और लेटर से डिनोट कर दो. Let's say a equals 2x plus 14.04 degrees. Now, what do you get when you do that? The equation converts to something like this: square root of 17 into cos of a equals 3. And now that's pretty straightforward to solve, right? लेकिन आपको क्या करना है, इस इंटरवल को भी एडजस्ट करना है. इंटरवल कहां से कहां तक दिया हुआ था? उसने कहा था x is between 0 and 180. What about the corresponding interval for a? Now, आप क्या करोगे? 0 इनपुट कर दो इसके अंदर. पहले 0 इनपुट करोगे आपको क्या मिलेगा? 2 into 0 plus 14.04. 2 into 0 plus 14.04. That's going to give you 14.04 here. And then if you input 180 here, that gives you 2 into 180, that's 360. 360 plus 14.04, that is 374.04. So जब आप angles देख रहे होगे quadrants के अंदर, you have to make sure that your angle is within this interval. इस interval के अंदर होना चाहिए. जितने भी angles आपके पास आएंगे इस interval में वो आपको consider करने होंगे. ठीक है? Now, what do we do at this point? We find the basic angle. We say cos of alpha equals 3 over square root of 17. Let's find the basic angle first of all. पहले एक step और दिखा देते हैं यहाँ पे. Cos of a is 3 over square root of 17. Basic angle आपको find करना है. Cos alpha equals 3 over square root of 17. What about the value for alpha from this? Find cos inverse of 3 divided by square root of 17. And see what that turns out to be. This is giving me 43.31 degrees. degrees. Or 38 है तो उसको हम 314 कर देंगे. चला. This is the value of the basic angle that we're getting. Okay. अब हम क्या करेंगे? We are going to think of quadrants. Which quadrants can we be in? Cos is positive. Where is cos positive? Cos is positive in the first quadrant or in the fourth quadrant. ये दो quadrants हैं जहाँ पे cos positive होता है. So you can either be here, alpha could be here, or alpha could be here. अब first quadrant में angle क्या बनता है आपके पास? 43.314. Let's write that down first of all. That means A is either equal to 43.314. That's in the first quadrant. या फिर आप देखोगे fourth quadrant के अंदर उसमें क्या हो सकता है? 360 minus 43.314 degrees. All right.
अब ये दोनों इंटरवल के अंदर आ रहे हैं आपके 43.3 भी इंटरवल में आ रहा है और ये दूसरा एंगल भी इंटरवल में आ रहा है. These are the only two possible values that you have. Negative values तो आपके पास इंटरवल में नहीं है, तो आपको क्लॉकवाइज जाने की जरूरत नहीं है. अब आप क्या करोगे, वापस इसको x में ले जाओगे. a क्या था, a was actually 2x plus 14.04. तो उस a की जगह पे वापस डाल दिया दोनों इक्वेशंस के अंदर. So we have 2x plus 14.04 here as well. On the other side we have 360 minus 43.314. Solve these two equations and find the values of x from this. ये आपके पास इसके final results आ जाएंगे. Let's figure this out. 43.314 minus 14.04 divided by 2. And that's giving me 14.6 something. So that's 14.6 degrees. That's one value of x that we're getting. And then look at the other one, 360 minus 43.314 minus 14.04 divided by 2. And that gives me x equal to 151.3 degrees. These are the two answers that we're getting from this. X equals 14.6 or 151.3 degrees. All right, that was question number 4. That's all that we had to do here. Let's move on. Question number 5. Now it says solve this equation giving the answers in the form x plus iota y, where x and y are real and exact. Okay, now let's solve this equation. We need our answer in the exact form. Decimals mein nahi lekar jana. It's a quadratic equation. So all you have to do is just input values in the quadratic formula and that's it. But make sure that you show working for that. So it becomes z equals minus into minus 6i. Let me actually write down the values of a, b, and c here for clarity. A is 1, right? In place of b, we have minus 6 iota. And in place of c, we have minus 12. ये values मैं quadratic formula में input कर रहा हूँ. Minus b plus minus square root of b squared. So that's minus 6 iota whole squared minus 4 into 1 into minus 12 whole divided by 2 into 1. Okay, now let's simplify this and see what that gives us. 6 iota plus minus square root of 36 iota squared minus into minus 12. That's minus 4 into minus 12. That is going to give you 48. And the denominator, you have 2. Okay, now the numerator gives us 6 iota plus minus square root of 36 iota squared. What's that? That's going to become 36 into minus 1, right? Iota squared is minus 1 plus 48. Outside we have 2, and that gives us 6 iota plus minus square root of 12 over 2. Now put this on your calculator. Square root of 12 आपने डाल देना calculator पे. ये आपको ना simplify करके दे देगा ये square root. अगर वो simplify हो सकता है, this is actually going to become 2 into square root of 3 whole divided by 2. And now you can simplify this. 6 iota over 2, that is going to be 3 iota. 2 square root of 3 over 2, that's going to be just square root of 3. So you have these two complex numbers. इनको आप अलग अलग लिख लें. You would say z is either equal to square root of 3 plus 3 iota. I've just written the real part first, imaginary part second. That's one possibility. Or another possibility is you have minus square root of 3 plus 3 iota. These are the two possible values of z that we're getting from this. And these are our final answers. Okay, इसको decimals में नहीं करेंगे, इसको हम exact form में ही रहने देंगे. Remember, these are not conjugates. Conjugates में imaginary parts के sign opposite होते हैं. Conjugates आपके तब आते हैं जब आपकी जो equation है उसमें सारे coefficients real हो, सारे numbers real आ रहे हो. यहाँ पे आपके पास equation के अंदर ही iota आ गया. तो इसमें आपके जो आंसर्स आते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होते हैं. So that's why we're not getting conjugates in this case. Okay, and that's okay. Let's look at part B now. It says on a sketch of an Argand diagram with origin O, show points A and B representing the roots of the equation in part A. Okay, let's show that.
इसमें हमें लोकस तो नहीं बनाना कहीं पे, नहीं। ओके, सो वी डोंट हैव टू ड्रॉ एनी लोकस हियर। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप सेम स्केल लें, जनरली हम दोनों एक्सिस पे सेम स्केल ले रहे होते हैं जब भी हमें लोकस बनाना होता है, बट इस केस में वी कुड गेट अवे विद इट। फिर भी हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रख लेते हैं, लेकिन हम नंबर्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द रियल एक्सिस we need square root of 3 and minus square root of 3. So instead of having 1, 2, 3, we can just write on the left side, there's a number which is minus square root of 3. On the right side, we have a number which is plus square root of 3. Because square root of 3 is somewhere around 1.7. तो 3 कहाँ पर होगा, फिर उसके हिसाब से आप देख लें, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होगा. So let's say this is 3 on the vertical axis, like this. The points that you get are going to be these two. There's one point here and another point here. Let's call one of them A and the other B. These are 2 points that you had to represent here. Okay, these are points A and B. That was just one mark. That's all that you had to do here. Let's move on. It says find the exact modulus and argument of each root. Okay. Exact modulus and argument. Let me write down those two numbers here. One was square root of 3 plus 3 iota, and the other was minus square root of 3 plus 3 iota. Now, just by looking at the diagram, you can see they are at the same distance from the origin, right? तो distance दोनों का same ही होएगा. तो आप कोई भी एक निकाल लें, and that's going to be enough. All right, because दोनों के x और y जो coordinates हैं, दोनों के real और imaginary parts हैं, वो numerically same है. सिर्फ minus sign का plus minus का difference है. उनकी जो absolute value है वो दोनों में equal है. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक निकाल के कह सकते हैं दूसरे का भी वही है, और एंगल भी इसी तरह से होएगा. अगर आप एक निकाल लो तो दूसरा भी उसको यूज करके आ सकता है आपको. ठीक है, अच्छा चलिए लेट्स स्टार्ट विद this number that we have on the right side first. Okay, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं. Modulus of this first number, let's call the z1, let's call this z2. So what we're doing first is we're finding the modulus of z1. कैसे आएगा? Square root of square of this number, so that's square root of 3 whole squared plus 3 squared, and that's going to give me square root of 3 plus 9, which is square root of 12. We need an exact modulus. इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे. Square root of 12 भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into square root of 3, and that's also fine. किसी भी एक फॉर्म में छोड़ सकते हैं इसको. ठीक है. Okay, so this is the modulus that we're getting from this. What about the argument now? Let's find the argument for this as well. अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते थे? आर्गुमेंट में बेसिक एंगल निकालते थे. लेट्स फाइंड द बेसिक एंगल. 3 over square root of 3, राइट? आपको एग्जैक्ट चाहिए मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. कीप दैट इन माइंड. 3 over square root of 3, what's that? This is actually the same as square root of 3, right? Because numerator can be written as square root of 3 का whole square, फिर एक square root of 3 cancel हो जाएगा, and you're left with square root of 3. So tan alpha equals square root of 3. Square root of 3 किस वैल्यू पे tan आ रहा होता है आपका? It's at 60 degrees, या फिर radians में हम क्या लिखेंगे? Pi over 3. या आप calculator से कर लें. Calculator is going to give you pi over 3. Just make sure your calculator is in radian mode. Okay, radian mode में होना चाहिए, and that will give you pi over 3 as the result. So that's the basic angle that we have. Basic angle आ गया. अब आप क्योंकि first quadrant के अंदर हो, तो इसका argument भी यही होएगा, right? Argument remember कहाँ से measure करते थे? Positive real axis. So यहाँ से argument measure करना होता है आपने. तो यही आपका argument भी होएगा. You'll say argument of z1 therefore is pi over 3. Now z2 is going to have the same modulus, so that is also going to be square root of 12 here.
right? Because वो आपके डायग्राम पे नजर आ रहे हैं, these are like symmetrical, so this is also square root of 12, the modulus of z2. What about the argument? आर्गुमेंट आप इसमें कैसे फिगर आउट करोगे वो हम देखते हैं. ये हमने अल्फा निकाला. अगर हम लेफ्ट साइड बेसिक एंगल निकालेंगे तो वो भी वही वैल्यू आ रही होगी, राइट? बिकॉज इट्स स्टिल द सेम वैल्यूज, वर्टिकली भी वही है, हॉरिजॉन्टली भी वही है, तो वो भी आपका सेम बेसिक एंगल आ रहा होगा. लेकिन इसमें आर्गुमेंट क्या आएगा? आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी दिस नंबर हियर. तो आप क्या करोगे? पाई में से अल्फा माइनस कर दोगे इस केस के लिए. तो आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या हो जाएगा? If this angle is pi over 3, what about the remaining angle? Right side say, that's going to be pi minus pi over 3, which is 2 pi over 3. This is the argument of the second root that we have. ठीक है, दोनों का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ 12 है. Arguments क्या है? Pi over 3 and 2 pi over 3. In part 4, in part D, it says, hence show that the triangle OAB is equilateral. Okay, OAB triangle. So अगर आप इसको भी join कर दें A और B को, we have to show that this triangle that we have here is equilateral. Now we have already found two sides of this triangle, right? And they are equal to each other. We know that, right? Now there are multiple ways of looking at this. अब ये एक possibility क्या हो सकती है? We know that this angle is pi over 6, this angle is pi over 6, right side वाला भी. तो ये remaining angle भी pi over 6 होना चाहिए, दरमियान वाला. सॉरी, pi over 6 नहीं होना चाहिए, pi over 3 है दोनों साइड वाले थे. pi over 3 होना चाहिए दरमियान वाला भी. दे शुड ऐड अप टू pi. ये pi over 3 आ गया. अगर ये pi over 3 है तो अभी हमें ये पता है कि जो OA है और OB है ये एक दूसरे के इक्वल है. तो अभी के लिए वी कैन से इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए. तो बाकी एंगल्स भी आपके पर क्या बन जाएंगे? pi over 3 और pi over 3 बन जाएंगे. सो दिस वन वे ऑफ डूइंग दिस. अब एंगल सारे प्रूव कर देंगे pi over 3 आते हैं. अगर एंगल सारे pi over 3 आते हैं तो इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दिस. इसकी वर्किंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है. एंड इजियर वे ऑफ डूइंग दिस इज आप AB की लेंथ फिगर आउट कर लें. दो लेंथ्स आपको पता है, तो AB की लेंथ भी अगर आप निकाल लेंगे तो वो भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाती है, दैट विल प्रूव दैट इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो दैट्स व्हाट वी डू देन. वी फाइंड द लेंथ ऑफ AB. हाउ कैन यू फाइंड दैट? लुक एट द डायग्राम. A से लेकर सेंटर तक, मिड पॉइंट तक आपके पास कितना डिस्टेंस आ रहा है? यहाँ पास दो अगर पार्ट्स में डिवाइड कर लें इसको, वी कैन से दिस पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस पार्ट इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो AB डिस्टेंस कितना आ जाएगा? लेट्स फिगर दैट आउट. AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, and that's going to be 2 square root of 3, and that's the same as square root of 12. वो भी आपके पास वही आता है. You can say this is also square root of 12, and that proves that OA equals OB equals AB equals square root of 12. ये सारी लेंथ्स इक्वल है, so that's why OAB is equilateral. ऑलराइट, आपने सारे प्रूव कर दिया कि सारी लेंथ्स इक्वल हैं. दो लेंथ्स आपने ऑलरेडी निकाली हुई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 12. थर्ड भी आपने प्रूव कर दी कि वो भी वही आती है. So that's why it's an equilateral triangle. All right, let's move on to the next one. Question number 6. It says, relative to the origin O, the points A, B, and C have position vectors given by OA, OB, and OC using a scalar product. Scalar product का मतलब होता है dot product. Find the cosine of the angle BAC. Okay, angle का formula एक ही होता है आपके पास vectors के अंदर. And it looks like this. Cos theta equals A dot B over modulus of A into modulus of B. But remember, जब आपके पास इस तरह से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एंगल चाहिए होता है, यहाँ पे हमें A पे एंगल चाहिए, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपको कौन से दो वेक्टर्स यूज करने हैं. ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे कि कौन से दो वेक्टर्स यूज करने हैं. या तो जो दोनों वेक्टर्स आप यूज कर रहे हैं वो दोनों A से स्टार्ट होने चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम AB यूज कर लें और AC यूज कर लें, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. या फिर दोनों A पे एंड होने चाहिए, तो हम BA और CA यूज कर सकते हैं. इनमें से एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन या सेकंड कॉम्बिनेशन. ठीक है,
अगर इसको मिक्स एंड मैच करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, आपको सही आंसर नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स फाइंड वेक्टर ए बी। दोनों हम वो वाले वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं. So one vector is AB, for instance, and the other is going to be AC. Okay, now what's AB? AB can be written as OB minus OA, position vector of the second point, minus the position vector of the first point. OB में से OA minus कर दें. 3 minus 1, that is 2. 1 minus 3 is minus 2. And then 2 minus 1 is 1. This is AB vector. What about AC? This is going to be OC minus OA, right? 5 minus 1, that is 4. 3 minus 3 is 0. And you have minus 2 minus 1, that is minus 3. These are the two vectors AB and AC. Now what we need to do is we need to find their dot product. Let's see what that turns out to be. AB dot AC. Corresponding terms को multiply कर दें. 2 into 4, that's 8, plus minus 2 into 0 is just 0, plus 1 into minus 3 is minus 3. 8 minus 3, that gives us 5. The dot product is 5. Okay. What about the magnitudes? Let's find the magnitude of AB. That's going to be square root of 2 square plus 2 square plus 1 square. And that turns out to be square root of 9, which is 3. That's the magnitude of AB. What about the magnitude of AC? Square root of 4 squared plus 0 squared plus 3 squared. And that turns out to be 25 square root, which is 5. We have the magnitudes of both those vectors now as well, 3 and 5. All you have to do now is input values in the angle formula, cosine वाला formula उसके अंदर और देख लें आपके पास क्या होता है. Cos of the angle BAC, what is that going to be? Dot product of those two vectors, as long as you've been careful in choosing the correct vectors here, AB and AC, right? Numerator में आप क्या लिखेंगे? Dot product में क्या आता है? 5. Denominator में we have their magnitudes multiplied. So we have 3 and 5. 5 and 5 get cancelled. And what are we left with? 1 over 3. We did not need to find the angle here. उसने सिर्फ cosine of that angle पूछा था. तो हमें वो angle निकालने की जरूरत नहीं है. This is going to be our final answer. We don't have to do anything after this. Okay, we said cos of BAC therefore is 1 over 3, and that's what we were looking for. Okay, angle नहीं चाहिए था, उसका cos चाहिए था. Part B of this, it says, hence find the area of the triangle ABC. Give your answer in a simplified exact form. Okay, अब इसने specify किया simplified exact form, तो simplify करके आपने answer देना है. Eventually, triangle ABC का area. Now, how do you figure that out? There are some points A, B, and C somewhere. Let me represent them here. इस तरह से आपकी कोई ट्राइंगल है. अब हमें नहीं पता वो एग्जैक्ट पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ 3D फिगर. 3D हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते सही तरह से, बट लेट्स जस्ट डू इट रफली. हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ऑलराइट, व्हाट वी नो इज द एंगल, द cosine of the angle BAC. Let's call this something. Let's call this theta. Right? उसने exact मांगे. अच्छा, so that's also something that you have to be a bit careful about. We need an answer in the exact form. We have this angle. Let's call this theta. हमें पता है कि इसका cos क्या है. So we have found in the first part that cos of theta is 1 over 3. This is what we have figured out in the first part, right? We also know two lengths in this triangle. AB is 3 and AC is 5. AB is 3 and AC is 5. We know these two lengths. We have two sides and the angle between them. What formula can we use for that? We can use half AB sine C, right?
एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी. We have two sides, 3 and 5. All we need is the angle of this angle of the vertex between these two sides, sine of theta. What is that going to be? We need an exact value for this. ये नहीं कर सकते कि इससे हम cos inverse निकालें पहले, because cos inverse जो है वो exact नहीं आएगा आपके पास. Even if you were to try this on your calculator, कि आप पहले ये करें फिर आप साइन डाल दें कैलकुलेटर में डायरेक्टली, तो कैलकुलेटर तो आपको हो सकता है इस पे एक एग्जैक्ट आंसर दे दे अगर आप इस तरह से डाल दें, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. जब उसने एग्जैक्ट कहा होता है तो आपको वर्किंग सारी शो करनी होती है. आपको शो करना है कि cos थीटा से हम sin थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं. Now this is something that you have done in paper 1. If you know one trigonometric ratio, how can you find the other trigonometric ratios from that? There are two ways of thinking about this. You can either use identities, sin square theta plus cos square theta identical to 1, वो वाली identity use कर लें, that's one possibility. The other possibility is आप right angle triangle को use कर लेते हैं. आप कहते हैं कि हमारे पास अगर एक right angle triangle है जिसमें एक साइड बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है, cos की डेफिनेशन क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. So if our base was equal to 1, the hypotenuse should be 3. इससे हम perpendicular निकाल सकते हैं, because perpendicular square plus base square, so perpendicular square plus 1 square, that should be equal to hypotenuse square. So perpendicular हमारे पास यहाँ से आ जाता है 9 minus 1, which is 8. So that's square root of 8. So what about sin theta then? Sin is defined as perpendicular over hypotenuse or opposite over hypotenuse. आपके पास क्या आ जाएगा? Perpendicular is square root of 8. Hypotenuse is 3. So sin theta is square root of 8 over 3. Okay, and this is what we can use here now. All right. So sin theta हमारे पास ये आ जाता है. All we have to do now is input this value here in this formula and see what that gives us. We have 1 over 2 into 15 into sin theta, which is square root of 8 over 3. Now we can simplify this and see what that gives us. 3 and 15 get cancelled and we have 5 here. Square root of 8, if you were to simplify this, square root of 8 can be written as 2 into square root of 2. आप बेशक कैलकुलेटर पर डाल दें, square root of 8 कैलकुलेटर पर डालेंगे आपको मिलेगा 2 square root of 2. Why? Because 8 can be written as 2 square into 2, right? और फिर एक ये वाला 2 बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 square root of 2. उससे कैलकुलेटर पर डाल दें, आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा. So that is going to give you 1 over 2. In fact, ऊपर 5 आ रहा था आपके पास, so we have 5 over 2 into 2 square root of 2. Now 2 and 2 get cancelled, and you're left with 5 square root of 2 from this. That's the area of the triangle that we were looking for here. Okay, that was part B of this. ये हमने area find करना था. It turns out to be 5 square root of 2. You have to give your answer in exact form. तो आप इस तरह से इसको आंसर को छोड़ देंगे. Okay, you will not write this answer in decimals. Okay, that was question number 6. Let's move on to the next one. But before we do that, just a reminder to like the stream if you haven't already. It helps with engagement. It helps other people find it later in their YouTube search. And also, just a reminder that we have a lot of other helpful content available on the channel as well. You'll find a number of links given in the description of this video. सबसे पहले आपके पास कुछ quick revision videos हैं for the major topics in paper 3. You can have a look at that playlist. S1 की भी उसके अंदर आपको बहुत सारा content मिल जाएगा revision का. And then you have crash course recordings. उनकी playlist के link भी आपको मिल जाएंगे जिसमें पूरा syllabus covered है. If you want to do any particular topic in detail, वो आपको वहाँ पे उसके recording मिल जाएंगी. All the recordings are properly labeled. आपको मिल जाएगा कौन सा concept exactly कहाँ पे covered है. Okay, and you'll also find a yearly past papers playlist in which you have all the other papers solved from
2021 to 2023. ओके उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे पेपर्स मिल जाएंगे, सिर्फ नवंबर 2022 के पेपर्स रहते हैं, बाकी सारे आपको 2021 ऑनवर्ड सारे पेपर्स इसके अंदर उस प्लेलिस्ट में सॉल्व हो जाएंगे. All right, let's look at this now. Question number 7. Question number 7 says the variables x and theta satisfy this differential equation for theta between 0 and pi over 2. And x is greater than 0. It's given that x equals 2 when theta equals pi over 4. We need to show that derivative d over d theta of cot square theta is equal to minus 2 cot theta over sine square theta. And they've given that you can assume without proof that the derivative of cot theta with respect to theta is minus cosecant square theta. उसने cot का derivative बता दिया और उसने कहा cot square theta का derivative निकालो. Let's do that. We need to find the derivative of cot square theta. How do we do that? Cot square theta को आप power form में लिख सकते हो. Cot square theta का मतलब है essentially it's cot theta का whole square, right? That's cot square theta is the short form of this thing. ठीक है. अब इसको आप ये नहीं सोचोगे कि आपको cot का डेरिवेटिव नहीं पता तो इसको पहले tan में कन्वर्ट कर लो, वो करने की जरूरत नहीं है. उसने आपको cot का डेरिवेटिव इसलिए आपको बता दिया कि आपको tan में कन्वर्ट करने की इसको जरूरत नहीं है. अगर वो नहीं बताया होता तो फिर आप tan में कन्वर्ट करते हैं इसको, लेकिन उसने बताया हुआ है यहाँ पे cot का डेरिवेटिव. इसका मतलब ये आप इस पर डायरेक्टली अगर पावर रूल अप्लाई कर दो, how is that going to work? You will multiply by the power, so you have 2 multiplied and you have cot theta की power reduced to 1, power में से 1 minus कर दिया, so ये cot theta रह गया सिर्फ. Then you have to multiply with the derivative of cot theta, जो उसके अंदर वाला part होता है, base of the power, उसके derivative से आपको multiply करना है. What's the derivative of cot theta? They've given us here, that is minus cosecant square theta. You'll multiply by that. Okay, so this is what the derivative of cot square theta turns out to be. It's minus 2 cot theta into cosecant square theta. This is just a 1 mark question, so you can just leave it at this point. You don't have to do anything further than this. आप इसको as it is जो है वो छोड़ सकते हैं. Okay, अच्छा नहीं सॉरी, उसने प्रूव करने के लिए कहा है. I've missed that. उसने ये प्रूव करने के लिए कहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो उसको अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे वो साइन स्क्वायर हो जाएगा. उसने प्रूव करने के लिए कहा हुआ था, तो इसलिए आपको वो करना पड़ेगा. सो इट बिकम्स 2 cot theta डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. सो यू डू हैव टू डू दिस लास्ट स्टेप. अगर उसने सिर्फ फाइंड करने के लिए कहा होता, यू कुड लीव इट एट दिस पॉइंट एंड दैट वुड हैव बीन ओके. All right, चलिए आपने प्रूव कर दिया. Let's move on to the next one. Now it says solve this differential equation and find the value of x when theta is equal to pi over 6. So now we need to solve this differential equation. Which differential equation? This scary looking differential equation. How can we do that? Let's figure this out. So we have x sine square theta into dx over d theta, that is equal to tan square theta minus 2 cot theta. Okay, this is the equation that we have. We need to solve this differential equation and find the value of x when theta equals pi over 6. Okay, so how do we start with this? सबसे पहले आप क्या करते हो differential equation को solve करने के लिए? You have to separate the variables. So that's how we start. Okay, let's separate the variables first of all. You have theta terms on the right side. D theta नीचे है, इसको right पे लेके जाएंगे, right side पे D theta आ जाएगा. So you have to convert everything to, you have to take all the theta terms to the right side and keep the x terms on the left side, right? अब लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास बचेगा x into dx. On the right side, if we take sine square to the other side, that is going to leave you with tan square theta over sine square theta minus 2 cot theta divided by sine square theta. All right, and you have d theta multiplied with that.
बाहर आपके पास डी थीटा आ रहा होगा। अब क्या करें, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। वी हैव सेपरेटेड द वेरिएबल्स, एक मार्क आपको इसका मिल जाता है सेपरेट करने का। एंड नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू इंटीग्रेट इट, how to integrate the left hand side and the right hand side. Now, how do we think about this? अब देखें उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे ये क्यों निकलवाया है, आपको वो सोचना है कि is that relevant to this in any way? You have minus 2 cot theta over sine square theta here, and that's exactly what you have in one of these terms here. Minus 2 cot theta over sine square theta. तो बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली पता है, जो आपके पास ये टर्म आ रही है, we already know the integral of this thing is going to be cot square theta. So ये आपको evaluate करने की जरूरत नहीं है, you already know this. आपको सिर्फ क्या करना है, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल evaluate करना है, ठीक है? So let's do this. लेफ्ट साइड पर आपके पास x है, with respect to x, let's integrate that. वो आपके पास simply क्या आ जाएगा, x square over 2 आ जाएगा. राइट साइड पे you have first of all tan square over sin square. ये खुद से इंटीग्रेट करना है. You need to think about this. इसको क्या कर सकते हैं? It's a fraction. इस पे fractions वाले कोई भी rules नहीं apply होते. But one idea you can use here is you can say tan is the same as sine over cos, right? So tan की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, इसको कह सकते हो this is sine square theta over cos square theta divided by sine square theta, right? And दूसरा जो इंटीग्रल उसका आप अलग से रखें, इसमें आपके पास क्या चाहिए, माइनस आपको अंदर चाहिए इंटीग्रल के, तो दूसरे इंटीग्रल में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखो प्लस बाहर और फिर आप अंदर लिख दो माइनस 2 cot थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपने इन दोनों इंटीग्रल्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया इस तरह से, ठीक है? अब इनको अलग अलग इवैल्यूएट कर लें। ये इंटीग्रल तो हमें पता है क्या होता है, ऊपर से देख लिख लेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल में क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर गेट कैंसिल्ड एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, राइट? इसकी इंटीग्रेशन हमें ऊपर पता है ये क्या होनी चाहिए, cot स्क्वायर थीटा, इसको हम cot स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू आर लेफ्ट विद नाउ, 1 ओवर cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स थिंक अबाउट दिस नाउ। 1 over cos square की integration. Again, none of the rules for fractions are going to apply to this. तो हम क्या करेंगे, cos square को उठा के ऊपर ले जाएंगे। cos square के ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, remember cos किसका reciprocal होता है, cos is the reciprocal of secant. So in the numerator you could get secant square theta like this. And secant square is something जिसका integral आपको directly पता होता है, right? Secant square integral होता है tan का, tan का derivative is secant square, right? So secant square का integral क्या आएगा, that's going to be tan. So you have tan theta plus cot square theta plus c here like this. Make sense? ये आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, बट आपको c की वैल्यू फिगर आउट करनी है, c की वैल्यू फिगर आउट करनी है, फिर आपने x की वैल्यू निकालनी है, जब थीटा पाई ओवर 6 है। Now how do you find the value of c? Let's think about that. Are we given a point? Yes, it says x equals 2 when theta equals pi over 4. इसने कुछ और भी information यहाँ पे दी है, it might be handy later. Theta is between 0 and pi over 2 and x is greater than 0. उसने एक point दिया हुआ है, when x is equal to 2, theta is pi over 4. We're going to use this point to find the value for c. x2 and theta pi over 4. Let's put that here. We say let's input x equal to 2 and theta equal to pi over 4. And see what that gives us. x की वैल्यू 2 इनपुट कर दें और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। Okay, I'm sorry, I missed the message in the chat box. They were updating quite slow for me on the other device. You're welcome, Hussain. Thank you for the appreciation. That is one motivation that we have when we do this. Walaikum assalam.
And of course, the primary motivation is that it helps you guys and it makes you do well. Walaikum assalam, Abdurrahman. Yeah, thank you for that. ये हमारे पास आ गई। I'm sorry, मेरी चैट बहुत ही स्लो अपडेट हो रही थी, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो अब आ रहे हैं। या ग्राफ्स P3 में जो आते हैं, आप अगर देखें P3 क्रैश कोर्स की जो वीडियो है ना, P3 क्रैश कोर्स की वीडियो, P3 क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें आइट्रेशन का सेकंड पार्ट देख लें, उसमें आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे, सेकंड या थर्ड पार्ट आइट्रेशन का। उसमें उनके नॉर्मली ग्राफ सारे आइट्रेशन में आ रहे होते हैं ज्यादातर P3 में, तो उसमें वो सारे ग्राफ्स की ना एक समरी आपको मिल जाएगी जिनका आपको शेप्स पता होनी चाहिए। यू कैन हैव अ लुक एट दैट। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर मिसिंग द चैट अर्लियर, फॉर सम रीजन मेरा अपडेट नहीं हो रहा था। No, it just got updated. Okay, anyway. अच्छा, let's get back to this. So x equals 2 और pi over 4 यहाँ पे इनपुट किया, देखें हमारे पास क्या आता है। We have 2 squared over 2 equals tan theta. So that's tan of pi over 4 plus cot square theta. अब ये तो हम कैलकुलेटर में नहीं डाल सकते, राइट? cot square का तो कोई बटन नहीं होता कैलकुलेटर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 over tan करना पड़ेगा। So we can say this is 1 over tan square theta. So we can say 1 over tan pi over 4 का whole square, राइट? ये कैलकुलेटर में डाल देंगे। इनफैक्ट हमें एग्जैक्ट चाहिए होगा तो उसको हम वर्किंग भी शो करेंगे। ये देखते हैं इसको क्या करना है। 2 square over 2 on the left side, that's going to give us 2 tan of pi over 4. Pi over 4 is 45 degrees, right? Tan pi over 4 आपके पास 1 आ जाएगा, कैलकुलेटर में डाल के देख लें 1 आ जाएगा। We have 1 plus 1 over 1 plus c. Okay, and that gives you c equals 0. Interestingly, so the value of c turns out to be 0. All right, c की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करें, इसमें वापस इनपुट करते हैं x square over 2, that equals tan theta plus tan theta plus cot square theta plus 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ऑल राइट, अब क्या करें। अब हमें उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कहा है कि आपको थीटा फाइंड करना है। किस पॉइंट के ऊपर? मैं थीटा x फाइंड करना है when the value of theta is pi over 6। थीटा की जगह पे pi over 6 डाल दें और देखें x की वैल्यू क्या आती है आपके पास से। We put theta equals pi over 6. Let's see what we get from this. We have x square over 2 equals tan of pi over 6 plus 1 over tan square. So that's 1 over tan pi over 6 का whole square। ठीक है, इसको evaluate कर लेंगे, देखें हमारे पास क्या आता है। उसने exact तो नहीं मांगा, उसने एग्जैक्ट नहीं कहा, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या पूरा का पूरा आप कैलकुलेटर में डाल दें और देखिए आपके पास राइट साइड पे क्या आता है। लेट मी ट्राई दैट, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड। सो tan of pi divided by 4 plus 1 divided by tan, मेरे pi over 6 था, ये एक और केयरलेस सही हो जाना था। 1 divided by tan of pi over 6 and then whole square of this. I'll just put that whole thing on my calculator and let's see what we get from this. This is giving me 3.57735 on the right side. 2 से multiply कर दें and that's going to give you something that is 7.155, take square root and that gives you plus minus 2.6748, so that's just 5। ओके, ये 2 आंसर्स आ रहे हैं, बट जब मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है कि
क्या ये दोनों पॉसिबल है या कोई ऐसा केस है जो नहीं पॉसिबल? वापस आते हैं, क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है x is supposed to be greater than 0. Now if x is greater than 0, that means we only have to consider the positive answer here, not the negative one. Okay, ये हमने सिर्फ positive answer consider करना है, negative नहीं consider करना. So the value of x therefore turns out to be 2.675. इसमें उसने क्वेश्चन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, कोई भी नंबर डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. You can just leave your answer like this and that's going to be acceptable. All right, I hope that makes sense. That was question number 7. Let's move on to the next one. Okay, I'm sorry about this. I'll just take a 2-minute break. I have an important call to attend, and we'll resume with question number 8 in a couple of minutes. Just give me 2 minutes. Hopefully
Okay, assalamu alaikum guys. I'm sorry, there was something important that I had to attend to, and it probably turns out that I might not be able to continue with this session right now. So this was like you can say this is you can consider this part one of the paper, and I'll do the second part at another time then. Okay, so let's end this here, and I'll complete this paper uh, at another time, inshallah. Okay, I'm sorry for that. Uh, I'll see you again later. In the meantime, if you want, you can have a look at the description below to see a lot of other helpful content that you have available. You'll find quick revision videos, also complete syllabus recordings. I hope that turns out to be helpful. Okay, I'll complete this in another on another day in part two, inshallah. Allah Hafiz.